Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I'm going to start with again from the grammar portion, and we had done sentences, we have done conjunctions, kinds of sentences and types of sentences are done. This is another important topic that people must do along with sentences, that is direct and indirect object. So what direct and indirect object is in a sentence? Let's see a sentence over here. Sentence is I picked the ball. In this sentence, what is I? इस सेंटेंस में I की जगह क्या है? It is in a subject place. As we have done the definition of a sentence, what is the definition of a sentence? Sentence is a group of words which are arranged in such a way that it gives a complete sense. So over here you can get the message that I picked the ball. ये जम्बल्ड फॉर्म में नहीं है वर्ड्स, दे आर अरेंज इन सच अ वे कि इनका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है. द होल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कन्वेड. सेकेंडली, जब हमने कहा था कि भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है जहाँ तक कंसर्न है, इट हैज़ टू पार्ट्स, जिसमें क्या होगा? वन इज सब्जेक्ट एंड अदर वन इज predicate. So in this sentence we have subject and we have predicate. Subject is I and picked the ball is a predicate in which we predict something about the subject. हम क्या predict कर रहे हैं subject के बारे में इस sentence में कि I ने ball को pick किया है, right? So we have two parts over here, subject and predicate. फिर हम बात करते हैं कि जब हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भी इस प्रेडिकेट में वी नॉट ओनली हैव अ वर्ब बट वी ऑल्सो हैव अ ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हमारे पास जो पिक्ड है इट्स अ वर्ब एंड उसके साथ साथ हमारे पास क्या है? वी हैव अ बॉल ओवर हियर एंड दिस बॉल इज ऑब्जेक्ट. सेंटेंस को अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें तो इट हैज़ टू पार्ट्स, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. लेकिन इसको फर्दर डिवाइड करें इनटू इट्स पार्ट्स तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास इसका एक और जो है वो कंस्ट्रक्शन आती है, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो दीज थ्री एलिमेंट्स टुगेदर मेक अ sentence. So in this sentence we have I as a subject, then we have picked as a verb and the ball is the object. So then we have two types of objects in a sentence. अमूमन यूजुअली हमारे पास कभी एक ऑब्जेक्ट होता है, कभी दो ऑब्जेक्ट होते हैं. तो जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे देन डेफिनेटली वी विल हैव वन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अदर वन इज विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? वी हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट, दैट इज अ बॉल. सो आवर टॉपिक ओवर हियर, द मेन टॉपिक ओवर हियर इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट ऑलवेज फॉलो द ट्रांजिटिव वर्ब. अब नाउ व्हाट द ट्रांजिटिव वर्ब इज, हमें ये देखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है. तो अगर हम ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हम देखें कि भी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ब क्या है, दैट इज पिक्ड. और पिक्ड जो है इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब. क्यों है ये ट्रांजिटिव वर्ब? बिकॉज यहाँ पे एक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम सब्जेक्ट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. सो दिस वर्ब इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. ऐसा वर्ब जो कि एक्शन को ट्रांसफ़र करे फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. या सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कह लें कि ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. सो इट हैज़ अ ऑब्जेक्ट दैट इज़ बॉल. तो ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. तो सो अगर हम देखें, हम अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो हमने क्या बात की थी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट ऑलवेज फॉलो द ट्रांजिटिव वर्ब. सेकेंडली हमने कहा कि इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट एंड whom. ये किस चीज़ को आंसर करता है? ये आंसर करता है व्हाट को और whom को. अगर हम यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल देखें, द स्काउट वॉश द यंग पिचर इंटेंटली. तो अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में डू वी हैव अ सब्जेक्ट? यस, वी हैव अ सब्जेक्ट दैट इज़ द स्काउट. देन वी हैव अ वर्ब दैट इज़ वॉच्ड. और ये हमारे पास वर्ब क्या है? दैट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. क्यों है ये ट्रांजिटिव वर्ब? दिस वन इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. क्यों है? बिकॉज इसके बाद क्या आपके पास यू हैव अ ऑब्जेक्ट. हाउ यू विल कम टू नो दैट यू हैव ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है? पिक्चर है. किस तरह से? जब आपने कहा कि स्काउट वॉश्ड
what? The answer is picture, right? When you ask a question, the scout watched what? The answer is picture. So picture is your direct object. Then if we move to the next slide, we can see over here the other examples, like Ali invited Abu Bakr to dinner. Then if we ask a question over here, Ali invited whom? So Ali invited Abu Bakr. Abu Bakr is your direct object, right? Similarly, in this next one, the lion stalked the unsuspected hyena. So if we say the lion stalked whom, or the lion stalked what? Hyena is not a thing. So the question is, the lion stalked whom? The answer is hyena. So those which answers the question whom are the direct objects. So if we move to the next slide, we will see that the other examples, you can see over here another example, that horses thundered around the track. अब अगर हम ये देखें तो that word thundered is complete in itself. It does not require any object. So when we see that around the track, so around the track is not at all object. Why it is not an object? इसको हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है. हम इसलिए इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह रहे हैं क्योंकि थंडर हमारे पास क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है. अब इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये दैट इज कंप्लीट इन इट्स सेल्फ. द हॉर्स इज थंडर्ड, इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट. सो अराउंड द ट्रैक फिर क्या हुआ? सो अराउंड द ट्रैक इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज. जब आपके पास यहाँ पे प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रही है तो दिस वन इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज. द होल वन, द अराउंड द ट्रैक इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज. सो इट डज नॉट हैव एनी object, so the verb will be intransitive verb. Moving to the next one, coming to the indirect object, what indirect object is. सिमिलरली जिस तरह से हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की थी, वैसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, इट अपीयर्स आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट अपीयर्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लाइक it appears after transitive verb and it appears before the direct object, and it answers the question to whom, for whom and for what. If we look into the example, we can see over here, father gave his family many gifts. So अगर हम यहाँ पे देखें कि father gave his family many gifts, तो यहाँ पे आपके पास father gave his family. So after that transitive verb gave, so gave what? That is many gifts. So many gifts is your direct object, and after the transitive verb you have the family, and before the direct object you have this word the family. So the family is an indirect object that comes before direct object and after the transitive verb. अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं कि फादर गेव मेनी गिफ्ट्स टू हिज फैमिली, तो अब यहाँ पे क्या है, टू हिज फैमिली इज नो मोर अ ट्रांसिटिव वर्ब. नाउ it is no more a indirect object. It would become a prepositional phrase, right? So he gave many gifts. Gifts are the direct object. To his family would become a prepositional phrase because it would start with the to. So whereas both the sentences have the same sense, have the same meaning, but now their construction is different. In sentence 1 you have direct object and you have indirect object, but in the second sentence you have only one object, right? So what you people have to do, you have to see for the exercise in Wren and Martin, and you will solve it and you will send it to me on my WhatsApp number. Thank you very much.